Processing. NLP. Okay. All right. So we have got this recording started. So while we're waiting for everybody else, let's do one thing. So, Anjali ji, I mean, again, sticking back to the basics that we talked in the last class. So learning 2 words every day, right? So you would have learned probably 2 into 7, 14 words in the week. So share at least 2 words that you remember from that list and a few sentences that you would have made from that. You shared a list? No, I did not share the list. Like what we discussed in the last class, right? That the basic that we will need to stick to is keep learning 2 words every day, be it an existing word or new word that we learn. और उससे 5-6 sentences बना करके we'll practice that, right? So पूरे week में जो आपने 14 words सीखा होगा उसमें से कोई 2 words share करना है. Are you ready for Okay, that? sir. Yep. Yes, sir. Okay. So, in last class, our topic is flood. So, I collect words from that topic, important words, Mm-hmm. like which words were mentioned in that topic. Right. I use that word. Okay. First is affect. Affect. Okay. Flood affects most of the areas in our country. Hmm. With flood, uh, with flood, human life also affected as well as living creatures also. तो इसको छोटा करेंगे सेंटेंस को आप बोलेंगे विथ फ्लड अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ्स एज वेल एज अदर क्रिएचर्स Okay, sir. Okay. या फिर अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड आल्सो अदर क्रिएचर्स है ना Affects human life and also other creatures. Yeah, sir. Okay. मतलब सेंटेंस छोटा हो जाएगा एंड Hmm. इट इट नॉट काइंड ऑफ बॉदर यू मतलब आपको लगेगा कि छोटा सेंटेंस में सारा मैसेज आ जा रहा है ना Mm-hmm. ओके And in news channel I saw. Sir, can I elaborate? या ऑफ कोर्स आई मीन Okay. सी आई विल जस्ट आस्क यू टू स्पीक एज मच एज यू वांट Okay. Okay, sir. In news channel I saw that most of the granaries also sorry, most of the granaries also affected by that water which comes from flood. वेरी नाइस And Okay. Pinky ji has also joined. Good morning, Pinky ji. Good morning, Pinky ji. Good morning, sir. How are you, sir? I'm good. How about you? I'm also good. Very nice. All right. So, Pinky ji, while we were waiting for you, because of sorry, sir, sorry. Yeah, you no, I was continue. just setting the context. So, Pinky ji, while we were waiting for Archana ji and you to join, what we did was we requested Anjali ji to share 2 words that she would have learned, no, over the last week between the last class and today. So she just started with the first word affect, and she is making sentences from that. So no, we will let Anjali ji continue and share more. Yeah, please go ahead, Anjali ji. Okay. Anjali ji, you can continue. I was just setting the context with Pinky ji actually. Okay, sir. Hmm. um, mm, because of flood, government see the effects of flood, that how he nahi, sorry, sir. Go ahead, go ahead. Because of flood, government made so many schemes to to people who are affected from that flood, Okay. from that flood nahi, from the flood. Hmm. Affected by the flooding or affected by flood, both चलेगा मतलब
फ्लडिंग बाय फ्लड नहीं चलेगा एक्चुअली, दैट इज प्रॉब्ली ओवरडूइंग द सेंटेंस, है ना? Okay, sir. So please don't post these records because this recording because I made so many mistakes. नहीं नहीं, देखिए अंजलि जी, आई मीन इसमें अगेन दिस इज समथिंग, your it's only your name Anjali Kumari is displayed, right? Nobody knows you, your video is not visible, right? That is one part of it. Now the second point is, मन में कोई डर नहीं रहना चाहिए। जब हम सीखते हैं, सीखते वक्त में जो डर रहेगा ना, उससे दिक्कत होती है। एकदम भूल जाइए, ठीक है, गलती ही किया ना, कोई गलत काम तो किया नहीं, इट्स ओके। सो सी, जब जब अपनी गलती को बर्दाश्त करने का हिम्मत आ जाता है ना, तभी हम सीखते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए टेंशन मत लीजिए उसके लिए। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दिस टू एनीबॉडी। सी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? वी आर ऑल लर्निंग। मैं भी बहुत कुछ गलत बोलता हूँ, देन आई से सॉरी एंड देन आई करेक्ट इट। तो उसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिए, बिकॉज दैट फियर ऑफ मिस्टेक, दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इन लाइफ। ठीक है, उसको उसके बारे में सोचिए मत। हम सब स्टूडेंट हैं, हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सीख रहा हूँ, राइट? तो एकदम वो सब मन से निकाल Okay, दीजिए, sir. उसके लिए कुछ चिंता मत कीजिए। Hmm. क्योंकि आपका आज अगर वीडियो में आपको लग रहा है कि कुछ गलतियां हो रही है, 3 महीने के बाद आप यही वीडियो आप देखिएगा, आपका ही वीडियो रहेगा, अ, आपकी आवाज होगी, और उसका जो करेक्शन होगा, उसका जो लेवल होगा वो अलग होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल बी योर अकम्प्लिशमेंट। सो यू हैव अ रेफरेंस फ्रेम कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ पहुंच गई। ठीक है, Okay, sir. And my second word is confess. कन्फेस। ओके, I confess that I made so many mistakes. वेरी नाइस। Um, okay. Ram confessed that he made a murder. No, Ram confessed that he made the murder of his friend. ही कमिटेड मर्डर होता है एक्चुअली। Okay, he committed. जो क्राइम Uh, होता है ना, दैट वी कमिट, मतलब ही कमिटेड अ क्राइम, ही कमिटेड अ मर्डर, ही कमिटेड सुसाइड। जो भी गलतियां, जो क्राइम से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली इसमें कमिटेड फिट होता है एक्चुअली। okay, sir. Sir, if we confess in court, so So confessing in court is the same thing, right? You're acknowledging that you committed a crime, right? okay. So in that case also we use committed that I committed. No. No, you will say I confessed in court. So confessing is a verb, right? So you will not say that I confessed that I committed, right? Hmm. So you'll say that I confessed for the mistakes, or I confessed for the crime I had Hmm. committed. वो तो बाद में होगा। Okay. So confess is a little higher degree of मैं acknowledging बोलिए something. आपको भाभी क्या चाहिए? ठीक है, so confess again, acknowledge and confess are similar word, but confess has a little negative meaning to it, कि भाई आपने कोई गलती की, which is actually non pardonable, मतलब जहाँ पे माफी नहीं मिलती है, ऐसा confess। ठीक है, अदरवाइज आप एक्नॉलेज करते हो। एक्नॉलेज कैन बी इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ सेंस। Okay. Ram confessed the truth in front of his family members. वेरी नाइस। And और after देखिए, making mistake, confess confessing is the um, बेस्ट थिंग। confessing is the best thing. और देखिए शुरू में ना, वो बोलते हैं ना, जो हिंदी में बोलते हैं धारा प्रवाह, या नॉन, अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन स्टॉप। तो उसमें आप शुरू में आप लोग चाहें तो ऐसा कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लिए राम कन्फेस्ड हिज क्राइम, श्याम ऑल्सो कन्फेस्ड हिज क्राइम, राम एंड श्याम बोथ कन्फेस्ड देयर क्राइम। तो ये जो होता है ना, मतलब शुरू में आप एक एक नाउन से दूसरा नाउन चिपकाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं होता, उसको आने दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रोकना नहीं है। ठीक है, तो डोंट लुक फॉर अ वेरी यूनिक सेंटेंस, इट्स ओके टू डू मिक्स एंड मैच, बट फर्स्ट थिंग इज दैट फ्लुएंसी एंड फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस वन आफ्टर अनदर। उसके बाद देखिए अपने आप बनने लग जाएगा, है ना?
You can probably continue for maybe 2 3 more sentences. I mean, like based on the clue I've given. ओके सर. हाँ. ट्राई कीजिए, फिर पिंकी जी के पास जाएंगे. Sia made a mistake, so she confessed. In front of everybody. Yeah. Yep. Okay. मैं देखिए, मैं तो मेहनत करवाऊंगा सबसे, मैं तो कोशिश करवाऊंगा, मतलब कोशिश करते रहिए, कोई बात नहीं है. शुरू में थोड़ा लगेगा एफर्ट, बाद में नहीं लगेगा, बाद में कम लगेगा, है ना. एक दो और ट्राई कीजिए. आप लोगों का तो अंग्रेजी अच्छा है, मेरे से तो बहुत अच्छा है. No. नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे से एज इन, जब मैं आपके जगह पे था, व्हेन आई वाज इन माय अर्ली डेज ऑफ स्टूडेंट लाइफ, मेरी हालत बहुत खराब थी. आई मीन, आई कैन टेल यू. चलिए, आज लोग नहीं है तो 2 सेंटेंस बनाने के लिए आपको और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. आप सोचिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बनाइए, इट्स ओके. Thief confessed that he made a stole. ही स्टोल, बस ही स्टोल में ही हो जाएगा. देखिए, हो Thief जाएगा कि confessed he stole. हाँ, thief confessed for his stealing, or he stole. Thief He confessed. confessed that he stole, मतलब उसने चुराया, Okay, sir. Hmm. है ना. ठीक है. चलिए, तो ये ये आपका दो वर्ड्स हुआ, है ना. लेट्स गो टू पिंकी जी. उनसे भी सीखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, हम उनसे क्या सीख सकते हैं. पिंकी जी, योर टर्न. Okay, sir. Today is my first word is entreat. फिर से बोलिए, आई कुड नॉट हियर इट. Hello. हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से, फिर से बोलिए. Sir, today is my first word entreat. Entreat. हाउ डू यू स्पेल इट? ENT. Sir, request. Request. Sir, सर एक्चुअली रिक्वेस्ट का ना ये वो है वोकेबलरी है जिससे कई सारे सिनोनिम्स होते हैं ना हाँ हाँ. लाइक दैट. नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वर्ड, तो आप बताएंगे तो मैं भी सीख जाऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ. ओके एंड ट्रीट सर एक्चुअली मुझे सर्च करना पड़ेगा. जस्ट मैंने कल देखा था इसको तो माइंड में वो चीज आ रही थी लेकिन स्पेलिंग नहीं आ रही है. सर यू कैन सर्च ऑन द गूगल प्लीज. अच्छा, तो सिनोनिम ऑफ रिक्वेस्ट. अर्ज. रिक्वेस्ट. ओके. एंड ट्रीट. सिनोनिम्स ऑफ रिक्वेस्ट, देखते हैं क्या बोलता है. एंट्रीट. एंड ट्रीट. ENTREAT, करेक्ट. यस सर. ओके ओके, ठीक है. चलिए, मैंने भी कुछ चेक आज. ओके. नहीं, तो वही तो मेरा पर्पस है, मेरा तो मोटिवेशन वही है कि आप लोग से मैं सीखता हूँ. हाँ, बोलिए. ओके. Sir, please spell out. इट इज ENTREAT. Okay, please. So, no, the meaning that you will find on Google for entreat would be ask someone earnestly or anxiously to do something. So it is request is a simplified form of it. Entreat is a, what you call a deeper word. I have not heard people using this word very often, but it's like adding something to the vocabulary. Entreat. ठीक है, पिंकी जी, thank you for teaching us new word. Please go ahead. थैंक यू सर. आई आई एंट्रीट. I entreat you. Please, I entreat you. Mm-hmm. Sir, please wait. Yeah, okay, Someone, okay, someone will come. okay, okay. Wait. Hello, Archana ji, good morning. Morning, sir.
So we have started with our two-word journey. We'll finish that. Anjali ji has shared two words. Pinky ji is sharing her words, and then we'll come to you. And after that, we'll switch to the topic, and we will, share our point of view on any topic that you guys would have prepared. Or else, we will choose a topic at one time. Sir, Yes, I sir. think entries is the difficult word for all of us in the beginning of the journey. Yes, I would agree, but I do not discourage people from learning new word because whatever you learn, right? I mean, ये एंट्रीट को हमने इतनी बार इसके ऊपर ड्रम बजाया कि अभी याद हो जाएगा, राइट? कि भाई रिक्वेस्ट के बदले में एक दूसरा वर्ड भी होता है एंट्रीट. ठीक है, जब तक देखिए पिंकी जी वंस बिफोर पिंकी जी कम्स बैक, सुनिएगा थोड़ा हाउ 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 डू अमेरिकन्स प्रोनाउंस दिस वर्ड. ओके, एंट्री एंट्री. तो दिस इज हाउ दे प्रोनाउंस इट. तो मैं क्लास वही करता हूँ, मतलब जो भी नए वर्ड्स आते हैं जो जहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है या नया प्रोनाउंसिएशन होता है, सो I make my whole class pronounce it. So I'll be shameless in doing so. Okay, so entreat, 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 entreat. तो उससे जो है आपके मतलब आपका जो चेहरे का मसल होता है वो एडजस्ट हो जाता है, उसको उसको प्रोनाउंस करना आ जाता है. नहीं तो मैं उसको एंट्रीट या इंट्रीट कुछ तो बोलता है उसको, राइट? सो एंट्रीट एंट्रीट उसको प्रोनाउंस करने से वो आपकी जबान पे बैठ जाता है फिर. तो आप लोग भी चाहें तो जब तक पिंकी जी नहीं आती तो आप लोग प्रोनाउंस कर लीजिए. आई मीन नथिंग रॉन्ग इन. चलिए, अगर अगर It's entreat. एंट्रीट एंट्रीट हम लोग साथ में ही लगाते हैं जी, नहीं तो जयकारा लगाते हैं ताकि सर किसी को शर्म नहीं आए. Yes, sir, sure. एंट्रीट एंट्रीट Entreat. एंट्रीट. यहाँ Treat. पे ट्रीट तो हम लोग यूज करते ही हैं ट्रीट ना, तो उसमें एन लगाना है, सिर्फ एन है, वो एम एन वाला एन लगा दें. एंट्रीट एंट्रीट एंट्रीट. अच्छा अच्छा वर्ड है, मतलब ठीक है सीखने के लिए. और दूसरा ऐसी आई मीन ग्रेजुअली एज वी मूव फॉरवर्ड, राइट, एज वी गेट मोर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, I put a lot of focus on the style because English is all about style. You can say a, a sentence in a very raw form, or you can learn the pronunciation right to make it look more impactful. So we'll always keep focusing on making sure that the words that we pronounce, those are accurate and as professional as it could be. ठीक है, तो हम लोग वो भी कोशिश करते रहेंगे, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट विल गेट कंफर्टेबल एंड देन विल डू पॉलिशिंग. दैट्स द इंटेंट. ओके. So Pinky ji, are you back? Okay, so in that case, while we're waiting for Pinky ji, Archana ji, why don't you get started with your two words so that we can save some time? Yes, sir. Uh, Good morning, sir. Good morning. My words are Hmm. the first word is persuade. Persuade. Okay. Yes. Persuade means manana. Mm-hmm. I will persuade to your father. Mm-hmm. The second sentence is he was not persuading when I went to him. Hmm. He was not persuading when I went to him. वो Hmm. नहीं मान रहे थे. Hmm. I'm just thinking. You go ahead. I mean, I'll keep listening to you. I'm just trying to. Yeah. And the third sentence is persuade and anger is the real love of a good couple. Hmm. Hmm. See, the one thing is, Yeah. persuade is something where you try convincing somebody with some evidence, or no, is persuasion is more of a form of a convincing. So when you say uh, he was not persuading when I went to him, or I could not persuade him, उसमें थोड़ा सा वो कन्विंस करने वाला जो मतलब पार्ट है सेंटेंस का, दैट वी हैव टू थिंक प्रॉब्ली. I'm just thinking how do we
Um, Then, sir, how can we say just कि when I went there, uh-huh. he was not persuading. He was not मतलब Yeah. मैं उन्हें मनाने गया था वहां गया था बट वो मान नहीं रहे थे. आई मीन, तो उसमें उसका दूसरा थोड़ा सा एलेबोरेट करके सेंटेंस बना सकते हैं. आई I gave him all the reasons to agree, but it was difficult to persuade. Okay. So he is a guy whom you cannot persuade easily without enough evidence or enough data points. Persuading somebody requires a lot of effort. तो क्या हो जा रहा है ना, तब वहां पे वो एक मैसेज आ रहा है एक्चुअली कि there is something that is done behind the scene or to make that happen actually. So He was not getting persuaded. he was not getting uh, he was he was difficult to persuade. ऐसा बोल सकते Okay. He was difficult to persuade. हैं. उनको मनाना मुश्किल था. हम्म. Okay, sir. He is a tough nut, very difficult to persuade. तो ये थोड़ा नहीं Yes, था, sir. मतलब मोटी चमड़ी का है, And the बड़ा मुश्किल लगता है. हाँ. next sentence is, uh, please do persuade to my parents for disco. Okay. Uh, the next is, it's very tough work to persuade to your mom. She will not persuade. It's a very tough work to persuade your mom. खत्म, उतना ही. दूसरा सेंटेंस नहीं चलेंगे, चलेगा एक्चुअली. Okay, sir. Okay. That is the first word, Mm-hmm. that all sentence. And the second word is assure. Assure. Assured. Okay. Assure. भरोसा दिलाना. Mm-hmm. He has assured me for safety. Okay. I assure to you, sorry, I assure to your difficulty, I will take you in party. I assure to you. Sorry, sir. हाँ, नहीं नहीं. I assure to you, definitely I will take you in a party. तो यहाँ पे टू हटा दीजिए, ठीक है. टू का जरूरत ही नहीं है यहाँ Okay. पे. I assure you, I'll take you to Okay. party. Okay. I assure you, definitely I will take you in party. बिल्कुल. हाँ. And the next sentence is, give me assure that you will get at least 90% marks. ओके. फिर से बोलिए वो सेंटेंस को, मैं थोड़ा सा कहीं पे मिस किया शायद. Give me assure तो यहाँ पे that, हाँ, गिव मी, यहाँ पे आप इसे बोलेंगे, प्लीज यू एश्योर मी दैट यू विल गेट 90% मार्क्स, और प्लीज गिव मी एश्योरेंस दैट यू विल गेट assurance. 90% मार्क्स. Okay. And sir, if we start the sentence with give me, so there we use assurity. Yes. एश्योरिटी एश्योरिटी मैंने यूज नहीं किया है. आई थिंक एश्योरेंस इज मोर एप्ट if you look at the usage part of it. So you always assure somebody, or people give you assurance for doing something for you, or based on your expectation. So it's always assurance. जैसे इंश्योरेंस होता है ना, वैसे एश्योरेंस होता है. मतलब इंश्योरेंस मतलब कुछ चीज को निश्चित करना, किसी को इंश्योर करना, मतलब उसका बीमा कराना, और एश्योरेंस होता है गारंटी. I want your assurance that uh, you will get at least 90% marks. I want your assurance that you will get 90% marks. Yes. Yeah, correct. ठीक है. The next sentence is, I don't have assured to him. I don't have assured to you. आप यहाँ पे आपका मैसेज क्या है? I have not Sorry, sir, assured I you. can't.
हाँ, I I, can't assure to him. हाँ, I can't assure you, हाँ, that is a perfect sentence, है ना? ओके, अभी देखिए एक ट्रिक्स बता सिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है? मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ ए, वी डोंट Yeah. प्रोनाउंस इट एज ए, जैसे ए बी ओ यू टू, सॉरी, ए बी ओ यू टी, वी डोंट से अबाउट, वी से अबाउट, ठीक है? About. तो Assure. एश्योरेंस है तो अश्योरेंस। तो Assurance. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 90% ऑफ द केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आप ये देखिएगा, मतलब ये अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, सुन लीजिए। ये सब कुछ गूगल में मिलता है, मैं तो सिर्फ गूगल से ही बता रहा हूँ, इसमें देयर इज नथिंग दैट आई हैव इन्वेंटेड। सुन लीजिएगा, अश्योरेंस, ठीक है? तो ये एश्योरेंस नहीं बोल करके अश्योरेंस बोल रहा है ना, मतलब बोल रहा है। Assure. तो I ये want फॉर्मूला to ध्यान में assure. रखिएगा कि जो भी आ से Yes, स्टार्ट sir. हो रहा है, अ, वो हमेशा जो है, वो ए नहीं होके अ प्रोनाउंस होता था। अबाउट, अश्योरेंस, About. अश्योरेंस, Assurance. अश्योरेंस। तो सबको ही Okay, पांच sir. बार जयकारा लगा देते हैं फिर अश्योरेंस का। अश्योरेंस, अश्योरेंस, Assure. अश्योरेंस। Assure. Sure, sure, yes, sir. सर, सर मतलब मेरी Assurance. जीभ में थोड़ा धोखा है, मेरा टंग नीचे चिपका हुआ है, तो कुछ गलत गलत प्रोनाउंस हो सकता है। अश्योरेंस, अश्योरेंस, Assurance. Assurance. Sure. अश्योरेंस, हाँ। Assurance. हाँ, तालब विषय वाला Assurance. है ये शायद से। Yes. अश्योरेंस, Assurance. 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 हाँ। Assurance. हाँ, मेरे साथ आप लोग क्लास किया तो मेरे से ही ढीठ बन जाइएगा, मतलब डर भय को छोड़ देने का एकदम। मैं तो शर्माता नहीं हूँ, ठीक है? Assurance. अश्योरेंस, अश्योरेंस, ठीक है? Yes, ओके, sir. चलिए, तो आपका भी दो वर्ड हो गया, अंजलि जी का भी हो गया। पिंकी जी के पास जाते हैं। तो आपने पिंकी जी हम लोग को सिखाया था वर्ड दैट इज एंट्रीट। And treat. एंट्रीट इज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू रिक्वेस्ट। तो Yes, आप sir. सेंटेंसेस बना रहे थे, तो आप कंटिन्यू कीजिए। Okay, sir. I entreat you, please show the mercy to poor people. ओके, What is the meaning of an entry? रिक्वेस्ट, Request. रिक्वेस्ट का ही बहुत ही ग्लोरिफाइड वर्जन है वो। Synonym. हाँ, Entreat. सिनोनिम, हाँ, करेक्ट। Okay. And what is the spelling? एन और ट्रीट, E ई एन और E ट्रीट, N T R E A T. Entreat. करेक्ट। Okay. E-N से होगा ना? हाँ, ई एन है, तो हम लोग प्रोनाउंस Yes, करेंगे इसमें एन। एन मतलब एम एन entry. वाला, एम एन ओ पी वाला एन। Yes, एन yes, ट्रीट, yes. एन ट्रीट हो गया वो, ठीक है? Request. हाँ, Polite Yes, request. and we can use urge. हाँ, It's the तो same thing, करेक्ट, just करेक्ट, synonym. हाँ, सिनोनिम बोलेंगे उसको, सिनोनिम। URGE, urge. हाँ, इसमें थोड़ा एंजाइटी रहता है जो एंट्रीट होता है ना। इट इज समथिंग वेयर यू आर नो काइंड ऑफ पुशिंग इट रियल हार्ड विद सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी, मतलब थोड़ी सी आपको नहीं उत्सुकता है उसको लेकर के, ठीक है? सो दैट इज हाउ नो एंट्रीट इज काइंड ऑफ मोर हायर डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट, यू कैन से। Sir, what is the meaning of entreat? विनती एंट्रीट, करना. हाँ, विनती विनती, करना, रिक्वेस्ट करना. हाँ, In हाँ, front of anybody. करेक्ट, करेक्ट। Okay. इसमें थोड़ी सी एंजाइटी है, मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे कि मान लिया जाए कि अब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तभी जो आप Okay. भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो, तभी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा घबराहट होती है कि भाई फेल नहीं कर जाए। तो Okay. दैट इज एंट्रीट वेयर यू हैव सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी आल्सो, Yes, sir. घबराहट। ओके, तो पिंकी जी सुनाइए भाई, और सुनाइए। Okay. I entreat you, I entreat you. Please help me to find my documents. हम्म, करेक्ट। I entreat you. Please हम्म, drop to my mother in hospital. हम्म, ओके। And तो I इसमें entreat you. Please. हम्म, I entreat you. Please give me my phone. हम्म,
Why इसमें you are देखिए, laughing? नहीं नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मैं मेरे को ध्यान में कुछ दूसरा आइडिया आया कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको, एंजाइटी। हाँ इसमें थोड़ा ड्रामा चाहिए एक्चुअली, समझ रहे हैं? तो इसमें होगा कि आई एम सफरिंग बिग टाइम, आई एंट्रीट यू टू स्टैंड बाय मी। तो वहां पे जो है ना, उसकी मौके की नजाकत दिखती है। तो आप Actually, sir, you हम्म know, sir, why I'm using that sentence हम्म about phone? हम्म Because I'm suppose I'm going to somewhere, हम्म okay, and some robbers snatched my phone, and I request in front of them. हम्म We can use it or not? you can use it. Now again you're talking to a robber who will not be as polished as you expect them to. So then वहां पे आप Yes, एंट्री yes. बोलेंगे तो उसको उसके ऊपर से चला जाएगा वो, समझ नहीं आया कि बोला Yeah. क्या। Okay, okay, okay. तो I मतलब, understood, sir. I हाँ, understood. now coming back to the point, I'm saying when you are adding a lot more spice to what you are trying to say somebody, and when you are trying to show that anxiousness, जहाँ पे कि Okay. it's a do or die kind of a situation, right? That is where using entreat would be more appropriate. Grammatically is not incorrect, but that is where you will see the weight of the word. Okay, sir. Hmm? But grammatically I cannot challenge you, this is correct, this is, there's nothing wrong with it, but just that it could be a different situation where you would probably want to use it. Okay, sir. बट सेंटेंस बनाने में कोई धोखा नहीं है, आप बनाइए फटाफट इसको, ऐसा सेंटेंस बनाते रहिए। क्या होगा ना, जब हम लोग 2-4 महीने के बाद जब बात कर रहे होंगे, देन प्रॉब्ली यू विल स्विच गियर एक्चुअली। Okay. ठीक है, ओके। और कुछ सुनाएंगे इस वर्ड से या फिर विल गो टू नेक्स्ट वर्ड? Sir, now is next word. ओके, Enlarge. My एनलार्ज। second word is enlarge. ओके, Sir, enlarge. I want to. I want to buy. I want to buy enlarge photograph. हाँ तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच ये है, व्हेन यू से सी इट, व्हेन यू से लार्ज मतलब बड़ा, when you say enlarge मतलब you're trying to make something big. I want to enlarge my horizon, I want to enlarge the view of this particular image. So you are kind of stretching it to make it bigger. तो Okay. वहां पे आप उसको सही तरह से यूज कर पाएंगे एक्चुअली। आई मीन इसका लिटरल We मीनिंग भी can देखें we तो can use it like that. I want to show enlarge temple. नहीं, नहीं होगा। तो देखिए इसका मीनिंग आप देखेंगे अगर वोकेबलरी के हिसाब से, तो बोलता है एनलार्ज मीनिंग मेक और बिकम बिगर और मोर एक्सटेंसिव। Okay. सो इसमें एक एग्जांपल है, दे हैव रेनोवेटेड एंड एनलार्ज द 4 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग जो थी उसको और बड़ा कर दिया। तो आप बोलेंगे आई वांट टू एनलार्ज माय किचन, I want to enlarge my knowledge of English. I want to enlarge the portrait that I had in my drawing room. मतलब कोई चीज को बड़ा और करें। एनलार्ज को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब किस सेंस में? एनलार्ज मतलब कोई भी चीज को बड़ा करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज इट। जैसे कि तो ये सर कोई बिल्डिंग हो या कोई टेम्पल हो, तो कर हम सकते हैं, कर किसी भी सकते चीज, हैं, हाँ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू जनरली हम एनलार्ज, लोग किसी से किसी फोटो या किसी टॉपिक को बोलते हैं लार्ज करके बोलो, हाँ या सर? करेक्ट करेक्ट। तो वही एक्सपैंड एनलार्ज जो है इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। एनलार्ज इज अ मोर पॉलिश्ड वे ऑफ सेइंग इट। आप एक सीधा सा एग्जांपल, एनलार्ज दिस ओके सर, इमेज। बढ़ाने की सेंस में ना वी कैन यूज द, मतलब कोई भी चीज को बढ़ाने की सेंस में हमें यूज करना बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ बस बस बस। अगर कोई चीज बड़ी है तो उसके लिए नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई चीज इंक्रीज करना चाह रहे हैं। करेक्ट। ओके सर। तो जैसे जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं आई वांट टू, जैसे मैं बोलूंगा कि आई वांट टू एनलार्ज द कवरेज ऑफ माय इनिशिएटिव ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स।
मतलब मेरा जो इनिशिएटिव उसको मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। तो सेम सेंस में you can enlarge a building, you can enlarge an image, you can enlarge your knowledge, you can enlarge your kitchen, you can enlarge your temple, what not। तो आप सोचिए और क्या बड़ा करना चाहते हैं। I want to enlarge my classroom. वेरी नाइस। And आई वांट I टू want to एनलार्ज enlarge माय। my हाँ, I want to enlarge my business. वेरी नाइस। Okay. आई वांट टू एनलार्ज माय नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स आल्सो, बोल सकते हैं। Okay. नहीं, बोल सकते हैं, वो दैट इज Okay. आल्सो एप्रोप्रिएट। हाँ। Okay. आई वांट टू एनलार्ज माय नॉलेज ऑफ कुकिंग आल्सो। Okay. I want to enlarge my English speaking एबिलिटी। हाँ, बोल सकते ability. हैं। हाँ, करेक्ट। It's correct or not, हाँ sir? हाँ हाँ, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। मतलब यहाँ पे एनलार्ज एकदम पक्का नहीं बैठ रहा है, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन आप उसको दूसरा वर्ड बेटर हो सकता है। आप बोलेंगे आई वांट टू एनहांस माय इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी, वहां पे होगा। एनलार्ज मतलब थोड़ा फिजिकल चीजों के केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। आई वांट टू एनलार्ज दिस टेबल एंड मेक इट बिगर। Excuse me, sir. यप, Sir, enlargement of liver increases abdominal pain. बिल्कुल It's बिल्कुल। 100% correct. हाँ, बिल्कुल। Okay, sir. कोई भी चीज जो बड़ी हो जा रही है, बड़ी की जा रही है, that is where I mean you use it. So enlargement of liver is appropriate। हाँ पिंकी जी, और कुछ थोड़ा बहादुरी दिखाइए और एक दो चीजें सुनाइए, और क्या बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई वांट टू Okay, एनलार्ज दिस sir. पिलो, बोल सकते हैं, है ना। आई वांट टू एनलार्ज माय फोन एंड मेक इट बिगर। और कुछ भी, मतलब वही बोल रहा हूँ कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा दो वर्ड्स का हुआ। अगर एनलार्ज में, एनलार्ज हम लोग ठीक ही प्रोनाउंस कर रहे थे, बट अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। देख लीजिए अंग्रेज लोग कैसे बोलता है एनलार्ज। एनलार्ज, तो यहाँ पे एक ध्यान देने का चीज है कि एनलार्ज नहीं बोल के इनलार्ज बोल रहा है वो, ई और एन Enlarge. इनलार्ज है वो, Okay. ठीक है। Enlarge. Enlarge. इनलार्ज, इनलार्ज, Enlarge. है ना। So I want to enlarge this image. I want to enlarge uh, anything that is small in size। सर enlarge का spelling ENLARGE होगा ना, हाँ, तो उसको हम लोग इन क्यों प्रोनाउंस करेंगे? अब इसमें तो In नहीं, थोड़ा enlarge. N है एनलार्ज, N. देखिए हम लोग एनलार्ज हम बोलते हैं, लेकिन आप सुनेंगे ना तो उसको उसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए, फिर से सुनिएगा। गूगल पे enlarge बोलता है ये। एनलार्ज बोलता है वो। Enlarge. तो ये बेसिकली इन और एन के बीच का है। इनलार्ज मतलब एनलार्ज भी नहीं बोल रहे, एनलार्ज भी नहीं, एकदम लाउड एन नहीं है वो। इनलार्ज मतलब ई आई और एन जो के बीच का है वो एक्चुअली। इनलार्ज मतलब थोड़ा मिलाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। डोंट मेक इट साउंड लाइक इन लार्ज, डोंट मेक इट साउंड लाइक एन लार्ज, इट्स इन लार्ज, It's enlarge. है ना। Enlarge. ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दो वर्ड का जर्नी। तो अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ कि आप लोग दो दो वर्ड डेली सीखते रहिएगा, उसको रोकिएगा मत, बिकॉज दैट विल बिकम योर बैकबोन ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर रेस्ट ऑफ योर जर्नी एक्चुअली। तो वो करते रहिएगा। Sir, I have a request to you. हाँ हाँ, One day, sir, I want to hear your daughters spoken. you want to hear my daughter's spoken English, okay? I Yes. can do that। So I'll tell you, there's a video that I have on YouTube. I'm not sure if you have got a chance to see that. And that is where my younger one, who is in who's going to go to grade 5 now, I was having a casual conversation with her. So that video I have uploaded, that you can hear. That will give you a sense of how the American English is pronounced. Because both my kids are native speakers, because they have studied all through outside India, so they speak the American accent.
unlike mine. Okay. Mine is a Desi accent with little bit of polishing here and there, but they speak the authentic American accent. Now, my elder one, who is uh, going to 11th grade from this year, she is she has very nicely learned the British accent also. So what I will do one day is I will ask my young elder one to record, you know, a small paragraph which is spoken Okay. in British accent and American accent. So then you'll be able to see the Okay. difference between these two accents actually. Okay. Okay. Yes. मेरी बड़ी बेटी उसने उसने वो पता नहीं कहाँ से सीखा उसने, but she speaks very good British accent also. I mean, that is, again, she has to put effort, but she does it very nicely. Mm. Okay. So Is there any difference, sir? American yeah, and oh yeah, there's a huge difference, British? trust me. Huge difference. I mean, I'm not able to give you a very good example, but when I hear them, I can clearly make it out. I mean, if you want to, kind of do that, watch two movies. There's one movie, let's say Mission Impossible, which is purely American accent, and watch the other movie, that the Pink Panther, where we had Aishwarya acted in that one, right? Watch that Pink Okay. Panther and Mission Impossible, and you'll see the starking difference between these two accents actually. Okay. मैं भी मुझे अंग्रेजी पिक्चर उतना नहीं देखता हूँ मैं, बच्चों के साथ ही बैठ के देखा है मैंने, पिंक पैंथर देखा था, ट्रस्ट मी माय किड्स नो start laughing big time, that guy who speaks the British accent, that is so funny. You will actually enjoy that. उसमें Okay. आपको अंतर पता चलेगा एक्चुअली, वो लोग थोड़ा मतलब उनका अलग एक्सेंट अलग होता है। ऐसे बटर बटर को हम लोग बटर बुलाते हैं, ऐसे तो बुटर बुलाते हैं, बुटर। यहाँ पे अमेरिका में होता है बटर, तो मतलब डिफरेंस है Okay. थोड़ा। ऐसे जो हमारा जो इंडियन इंग्लिश है, जो हम लोग जो इंग्लिश सीखते हैं इंडिया में, उसमें ब्रिटिश एक्सेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बिकॉज नो हम लोग अंग्रेज लोग से सीखे थे पहले। यूएस में उसका एक्सेंट थोड़ा अलग है, तो वही है, जैसे जरूरत पड़ता है वैसे सीखता है आदमी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सेंट का, बट पॉइंट वेल टेकन। आई विल आस्क माय डॉटर टू रिकॉर्ड दैट। राइट नाउ दे आर, आई मीन दे आर इन इंडिया, दे विल बी बैक बाय एंड ऑफ दिस मंथ, तो उसके बाद मैं करता हूँ ना। ओके, तो हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो आप लोग कोई टॉपिक के बारे में बोलना चाहेंगे? आई वांट यू टू pick any topic of your choice and talk about it for 2 or 3 minutes. आप लोग तैयार हैं Mm, उसके लिए? हम लोग टॉपिक डिसाइड, आप लोग अपने पसंद का कोई भी टॉपिक बता रहा हूँ, मतलब खाना बनाने से लेकर के सीरियल तक कुछ भी चलेगा। आई जस्ट वांट यू गाइस टू स्पीक एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। अर्चना मैम, yeah. टेल मी समथिंग। कौन से किस चीज के बारे में बात करने में मजा आता है आपको, ये बताइए। अब जैसे कोई लड़कों से बात करेंगे ना, मुझे बोलेंगे तो मैं क्रिकेट के बारे में इमोशनल हो जाऊंगा, राइट? बच्चे लड़के क्रिकेट खेल खेल के बड़े होते हैं, तो क्रिकेट के बारे में बोलेंगे तो मैं कुछ भी बकवास करूंगा, आधा घंटा तो बोल ही दूंगा उसके बारे में। तो वैसे ही जो जो टॉपिक आपके दिल के करीब हो, जिसके बारे में आपको बात करने में मजा आता हो, जहाँ पे आप उस चीज को चेरिश करते हैं, राइट, वैसा कोई टॉपिक सोचिए। और हम यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर क्या सोचेंगे, मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी। इट इज अ सेटअप फॉर टॉकिंग एंड Okay, sir. टॉकिंग। हाँ। I'm going to share one incident which are happened in my life. हम्म Actually, my younger brother, हम्म and he was very naughty, and we are in Bihar in that time, हम्म and that uh, that seasons lots of sir, how can I say, means that was the summer season, and हम्म the day was very hot in that time, and हम्म my brother, who arranged all the fans and cooler, everything just collected in a one room, ओके and put everything. One fan is and kept in leg side,
one table fan just kept in the right side and left side, Hmm. everything around him. Hmm. Just and that time when I and my auntie, when I saw him, that Hmm. time we stunned to see him. What he was doing. Hmm. Okay, Hmm. and we planned that that at actually the it was I think 9 o'clock at p.m. Hmm. and it was going to sleeping time at night. So we decide at midnight we will सर कि हम लोग उसको डराएंगे रात में. We'll scare him. How आप can I बोलेंगे, say, sir? you can say we decided we'll scare him in the night. Scare मतलब डराना Okay, होता है okay. We decided to scare him at midnight. ना. Hmm. Okay, Hmm. and as soon it was 11:30 o'clock that time my auntie who just make me wake He and woke me said up. आप बोलेंगे he she woke woke me up. Hmm. she woke me up Hmm. and said let go in the backside of my home, back Hmm. door of my home, and the window was connected to my brother's room. Hmm. Okay, and just we opened the back door at midnight. Hmm. And that time when I hold a big stick on my hand. Okay, and Hmm. she suggest me just मतलब कि विंडो पे एक बार वो स्टिक से जोर से मारो. हाउ Hit कैन the आई window टेल. with the stick. Hit the window with the stick. Huh. Hit the window with the stick, and Hmm. suddenly I saw someone standing there. Hmm. I saw someone was standing there uh, Hmm. with with sir. I think um, who was there? I don't know. But suddenly, sir, my auntie and I both Hmm. scared lots of and just just throw that stick and Ran away. without closing the door, we just ran away from there. Hmm. Hmm. And that was the big incident of my life. That Hmm. whole night, just we sit together, and my brother is still sleeping with a Uh-huh. snoring. Uh-huh. Okay. Well, And see. at and somehow I just go there again and close that door, the backside Hmm. door. Hmm. And the next morning we were laughing a lot and just discussing. And when my brother just came to me, that I explained everything, and he was also laughing. So Okay. that was an incident. Okay. Not, I mean, see, when you were narrating that incident, I was kind of getting goosebumps, right? I mean, I'm living in this big house all alone. Okay, so my house has kind of what, how many, one, two, three, four, 5 rooms. It's a two-storied house, and I'm just staying Yeah. in one corner of the house right now. Okay. So when you were saying this, the first thing I did was I looked upstairs to see, if I see something in the balcony. I mean, see, if you can see it, right? See, Yes, sir. this is my house. Okay, if you can see that Okay. up. Duplex house, sir. Yeah. So I was kind of, first thing I did was I look upstairs if everything is okay there. And it's almost like Sir, midnight, right? but sir, I didn't know, sir, who was there. But Mhm. someone was standing there. No, I mean, again, it could be a mirage. It could be, um, see, we visualize things what we think, what is there in the back of the mind, right? मतलब होता ना कि अभी Hmm. इस घर में मैं रह रहा हूँ पिछले महीने बस नहीं, 3 वीक से अकेले ही रह रहा हूँ, Yes, sir. राइट? कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ, रोज पूजा पाठ करता हूँ, अब भगवान है तो हैं, तो वैसे भगवान पे भरोसा करते हैं तो कुछ गलत चीजें भी होती है उस पर भरोसा करते हैं. सो यू हैव दोस थिंग्स इन द बैक ऑफ योर माइंड, राइट? Yeah. एंड आई वुड नॉट डिनाई कि ऐसा नहीं होता, हो सकता होगा, होता भी होगा, पता नहीं, बट Yes. आई मीन we live in dual world, right, where we think that okay, something good is there, something bad is there. Bad thing will Yeah. not hurt me as long as I don't do bad things.
So that's how you know kind of gain that confidence. अब बाकी जो देखा सो देखा, क्या करेंगे? I mean, it has happened multiple times with all of us, right? All of us will have some incidents like this. I mean, I can tell you one story. I mean, last year during this Independence Day break here, we just drove to a place which was like 300 miles away from here, and Okay. it was a rainy night. We were just driving, and all of a sudden, our car got covered with fog, and for 2 3 seconds we could not see anything. I mean, the car was going at 75 miles per hour speed. Okay. For 2 seconds, I had no idea where I'm going, what I'm doing, and I had no visibility at all. Oh my God. And then my I and my wife both got uh, goosebumps. Kids were sitting in the back seat. They did not realize what happened, but I and my wife both felt that there's something. Hmm. And after 2 seconds, we're all back to normal. So I mean, we all Okay. come across different things, right? I mean, there are a lot of things that we know, and there are a lot of things that we don't know. So it could be possible. अब ठीक है, भगवान पे का भरोसा तो करते हैं, पूजा तो करती है, तो ठीक है. Yes. Okay, ठीक है. So thank you so much, Achna ji, for narrating this story. I will not Thank you. try to tell you that these are the things that you could correct, because that will kind of bother you. That will kind of interrupt you from your thought process, right? So Sir, I have a story. so I'll come to you also. That's what I'm saying. So when you're telling the story, I will not interrupt you guys and try to correct things. I will let you Yeah. go with the flow. And if you have any question that how do I say this thing, I will help you there. Okay. Okay, ताकि sir. Yes, sir. फ्लो बनना चाहिए. फ्लो आएगा ना तो फिर करेक्शन तो कर ही देंगे. चलिए पिंकी Okay, जी. Yes, sir. sir. over to you. Sir, Uh, sorry, sir. I should go now. That's okay. That's fine. I mean, you Yes. will miss Pinky ji and Anjali ji's story, but that's okay. You can watch the okay. videos later. Okay, sir. Yep. All right. Pinky ji, चलिए. Okay. Thank you, sir, giving me this opportunity to speak in front of you. Today, I'm going to share a story, Mhm. The Little Mouse and the Lion. Hmm. Once upon a time, there was a lion who lived in the forest. Hmm. One day, the lion heavily meal. One day, the lion heavily meal. He was going to sleep under a tree. Hmm. After a while, the mouse came. af- After a while, the mouse came to him and he started play on him. Hmm. The lion got up with anger. At Hmm. night sleep, Hmm. and he saw here and there. Then he saw a little mouse standing, trembling with fear. Hmm. The lion started. The lion caught it and he started kill to it. Then Hmm. the little mouse requested to him, please forgive me. Hmm. The lion uh, okay, the lion forgive it and went from there. Hmm. And on another day, the lion caught the lion caught in the net by hunter. Hmm. The little mouse came there and cut the net. Hmm. Just wait. Hmm. The little mouse came there and cut the net, and after that, the lion and the little mouse become a good friend and stay in and they live happily life in the forest. Right. On yes, happily life They lived happily thereafter. Hmm. Okay. thereafter. Yep. Yes, yes. तो यहाँ पे सेंटेंसेस में हम लोग करेक्शन करते रहेंगे बाद में. अभी के लिए तो अपने फ्लो में इतना बोला, दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग. एक Okay. छोटा सा चीज खाली कोशिश करेंगे कि लायन बोलेंगे. एल आई Lion.
हाँ, तो उसको हम लोग लायन प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेक्शन करते रहेंगे, तो अभी तो लायन पे ही रखते हैं। बट थैंक यू सो मच। सी, अभी आप थोड़ा सा 5 मिनट पीछे जाइए एंड देन यू थिंक व्हाट डिड यू डू। आपने ओके दो सर। मिनट या 3 मिनट आपने लगातार अंग्रेजी बोला। लाइफ में कितनी बार आपने पहले ऐसा कोशिश किया था? नहीं किया था, राइट? ओके। तो सी, दिस दिस इज एन अकम्प्लिशमेंट। इसको इसको मैं अकम्प्लिशमेंट बोलता हूँ। सही गलत तो ठीक है, करेक्शन करते रहेंगे, लेकिन हम्म। जो वो जो जो भरोसा होता है ना, जो यकीन होता है कि हाँ आई कैन स्पीक, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट विक्ट्री ओवर योरसेल्फ। आप खुद से लड़ रहे हो, आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ खुद से लड़ते हैं। व्हेन वी लर्न समथिंग न्यू, राइट, वी एंड अप फाइटिंग विथ आवरसेल्व्स, है ना? तो आपकी अपनी आपने एक लड़ाई जीत ली, ठीक है। चलिए अंजलि जी, ओवर टू यू। आप भी अपना स्टोरी Yes, सुनाइए sir. कुछ। सर मे आई गो? ये प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आप बाद में वीडियो देख लीजिए थोड़ा एक बार, ठीक है, ताकि आपको उससे विच वन वीडियो सर? अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। आप इसको देखिए, सुनिएगा, आपको भी इससे आइडिया होगा कि हाँ, मैंने क्या बोला था, कहाँ पे क्या कुछ सही हो सकता है कि नहीं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग दैट यू विल गेट आइडियाज फॉर एक्चुअली, है ना? ओके सर, ओके ओके ओके। ओके, हाँ, चलिए, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच सर। नो हैव प्रॉब्लम। अ नाइस डे चलिए और नाइट। आप तो मुझे तो गुड नाइट बोलेंगे, इसके बाद मैं सो ही जाऊंगा। आप लोग के लिए ओके हैव अ सर। नाइस डे। हम्म। ओके, गुड नाइट सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। हाँ अंजलि जी। Yes, sir. ओके, so you pick anything that you want to share. It could be a story, it Well, could be an I experience. don't have any story, but I want to talk about dance. I want to share my views on dance. Very nice, go ahead. In India, there are so many dance forms. Different states have their different styles of dance, Mhm. which is the good impact to and which is a good shows good speciality of that state. Hmm. While I'm preparing for government exam, as I told you, so in that I gradually know more and more information about dance and how many folk dance and how many state specific dance and how many classical dance are there. Hmm. So I think this is the knowledge I gain, and I don't know about more. I don't know more about dance. Hmm. Which state how can we say sir कि उस स्टेट का ये डांस है? Okay, so couple of things I would say. See, this is a very interesting topic. Okay, it might so happen since you're preparing for state government job, right? So Yes sir. in the interview also, this could be a very sticky topic. I mean, you can Yes sir. start talking about dance and people will not have anything else to talk. Okay, so they will get carried away with your this thing. So first thing Hmm. that you always remember is these are different dance forms. You, like you said in the beginning, so you'll always say that every state has a different dance form, and likewise, no, Kerala has Kuchipudi, Orissa has Odissi. So उसमें वो याद करना पड़ेगा कौन से स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म है। नो, आंध्रा एंड तेलंगाना Yes हैव sir. क्या बोलते हैं इसको, my daughter is a Bharatnatyam dancer. That's what I was thinking. Andhra and Telangana have, you know, Bharatnatyam state form of this dance, which is very popular. Like तमिलनाडु तमिलनाडु. तमिलनाडु में भरतनाट्यम है क्या? Yes sir. ओके, फिर तो पता करना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा एक्चुअली। My daughter learns Bharatnatyam from a Telugu teacher, and most of the students there are Telugu. So I was under the opinion that no, Bharatnatyam is probably from Andhra or Telangana. But anyways, you might be right. So yeah, so that's how you will probably make it like a 3-4 sentences. You'll say that in India, in India has a lot of states, and every state has its own form of dance. Some are very popular, some are not. Few of the dance forms which are very popular are uh, Bharatnatyam, Kathakali, Kuchipudi, Odissi, and all.
जो 5-6 आप याद कर लीजिएगा. So that will become your one topic. So आपको इंटरव्यू के लिए basically you'll have to prepare few topics that is something that you find very interesting, and you can prepare some data around that also. Yes, That sir. let me talk about some of the dance forms which are very popular in India. Some of the very commonly known dance forms, are the popular dance forms are Kathakali, Kuchipudi, Bharatnatyam, जो भी है ओडिसी बोलेंगे. And Bharatnatyam was has originated from this place. Kuchipudi has origin in this place. Odissi is from Odisha. Likewise, no, you will talk about that. Yes, sir. Actually, I'm trying to say that every states have different dance forms, and these dance forms show the speciality and specific things of that state. Correct. That depicts the culture and the beliefs of that respective Yes, sir. states Yes, sir. in the But form of a. on that time, I can't frame that sentence. But तो now वो I can frame it. हाँ वही वही होता है. देखिए वो तो प्रैक्टिस से होगा ना, वही बोल रहा हूँ. वो धीरे धीरे Yes, करके हो sir. जाएगा. That will not be a problem. Yeah. Yes, Okay. sir. So you can continue. And sir, I share my personal views Mm-hmm. that I love dance so much. From since childhood, I love dance only. Mm-hmm. And I want to get trained on dance, but my father didn't allow me to do dance. So Mm-hmm. whenever I get chance, like in school time, whenever I got chance, so I performed on stage. But when I go to any party with my parents, so Mm-hmm. on that time I can't dance with my friends or with my family members, because my father don't like that. Mm-hmm. But these all about my childhood. Huh. Right. Now, like gradually time passes, and when I grown up, so my father didn't deny me to anything. That like if I love to dance and I want to do dance, so I can dance in front of my family members also. Even my mother also encouraged me to do dance, but I think that what is the meaning of that, if what is the meaning of that she gave me permission, or my father give me permission to do dance in this age, but I lost that chance na do to learn dance in childhood. If I get got that chance, so I think I am trained. I am a very well dancer in any field, like in any dance form, I but I can missed that. No, see, I'll tell you, the art has no boundary. Okay, so if you want to learn something at any age, if you have passion for that, you can do that at any age. Okay, now you have, since you have got that permission from your parents, you can do Mm-hmm. that now also, if that still remains a passion in the back of your mind. Because be it music, be it dance, these are the very divine things that connects you to to the God or any supernatural power that you believe in, right? आप Yes, डांस sir. करो, सिंगिंग करो. These are things that connects you to your own soul actually. These are very Yes, good sir. things, right? What I can offer you is, if you want to learn Bharatnatyam, my own daughter, my elder daughter is a professional Bharatnatyam dancer. Okay, I can Even sir, I love classical dance only, so I not Bollywood dance, not hip hop dance, not Western style. I love only Indian dance, so classical dance. Bharatnatyam mein, the certification ceremony is called Aringitram. That is like, Okay, you become a graduate in the dance, and then that makes you qualified for teaching other kids also. So my daughter is okay. good. She has done everything possible. She does a lot of dance shows here in Dallas as well. So she's almost like a qualified dancer, and she's going to go for the Aringitram function sometime next year. So after that, she'll be a qualified Bharatanatyam dancer. I mean, professional Bharatanatyam dancer. If you want to Mm. learn, I mean, I can ask her to teach you. Not a big deal. Okay, sir. Even sir, when I in my childhood, I saw only a TV show, that Dance India Dance, only Dance India Dance, Mm-hmm. and now also when I scroll any video, so I stuck only in dance video. Uh, Mm-hmm.
Okay. So sometimes I try, or sometimes like I don't have time. I want to study. By profession, I am lab technician also, so I get busy on that also. Uh, And household works also there, so that's why. uh, But sometimes I am okay type dancer, like right. those who do a barat in barat, so like that. So there are different forms of dance. There's a one form is called Bharat dance that all Yeah, of us do, and there's a some one form called college dance, where people like us do dance when they are, when they don't see any, we don't have any fear of being wrong actually. तो कॉलेज hmm. में एक अलग फॉर्म होता है भाई, कोई कोई नहीं पूछ रहा है, जिसको जैसे करना डांस कर लो. So, Yes, sir. so but on a serious note, right? Dance is nothing but as a is a form of expression. So when you feel Hmm. something, when you enjoy something, dance and music, this enables you to express yourself better. So that is how it should be looked Hmm. at. लेकिन है कि अपने सोसाइटी में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हम लोग होते हैं, मतलब Yes, sir. And those who love dance by inner heart, so when music plays, so they eventually catch. They yeah. can't stay our feet. Yeah, I mean, see, my situation is the same. I mean, I'm not a dancer. I certainly can't Hmm. dance. I can do college dance, bar dance, but not any respectable dance. But when it comes to singing, I don't sing very well. But my I'm a die-hard fan of Kishore Kumar. You can say something bad about my family, my parents for a Okay, while, okay. but not about Kishore Kumar. So those are those things that is your your own what do you call passion or something that you like, right? Something that you Yes, admire, yes. right? So, Hmm. and you have to have those things, right? Because that is something that connects you to yourself. When see nothing is more important for you than yourself, right? आपको क्या करना है करियर में, आपको क्या प्रोफेशन चूज करना है, आपको अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करना है, दैट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ हाउ यू वांट इट टू बी. आप कैसे डिसाइड करते हो, कैसे बिल्ड करते हो, उसके ऊपर होता है, राइट? तो उसके लिए जरूरी है कि यू कनेक्ट विद योरसेल्फ. What is that you like, what is that you enjoy, what is that you admire, what is that you want to do for yourself, not for making anybody else happy, right? So वो सब चीज मतलब धीरे धीरे होगा ना. जैसे अभी तो आप लोग मतलब मेरे सामने बहुत छोटे हो, जब मेरे से बाल पक जाएंगे तो then you will realize all these things, right? So, sir, in US there is a craze about Indian dance. So see, US may again there are different forms, right? I mean, if you look at US as a country, it is a hybrid culture. You have a lot of people who are Native Americans. You have a lot of people from India who have settled down here, like me. There are Okay. people from countries like Mexico, Australia, China. I mean, a lot of people from China actually here. Hmm. So China, India, Mexico, there are three countries from where they have a lot of people, and then any other country in the world you think of, there are people from those places. So, so that way, anything and everything, that is part of any culture, you will find that in big or small form present in yours actually. Okay, it means your daughter get trained from an Indian teacher. Yep, yep. She's a Okay. Telugu teacher actually. I mean again, and I'm not sure if you know about this actress from old times. Her name is Meenakshi Sasadri. Okay. Meenakshi Sasadri was one of the Bollywood actress who is actually settled, and she lives in Dallas as well. So she Oh. also teaches kids Bharatanatyam. So I mean, we got to know about it after my daughter joined the other class. Otherwise, she might have got the opportunity to learn it from Meenakshi Sasadri itself. Hmm. Chali, कोई नहीं. I think we got enough opportunity to talk, and that was the intent, right? Because when you talk, Yes, sir. a lot of other things fall in place actually. So your confidence, your comfort with that language starts building up, है ना? Hmm. Yeah. Well, चलिए, very good attempt. Or we'll keep on trying, we'll keep on doing. But again, uh, people who have left the class, when they watch the video, a request for them also is make sure that every day that 15-minute time that you have to spend for yourself, right? For by Hmm. learning two words, practicing the sentences, making sentences, telling to somebody, that should not stop. Even if I fall sick and don't do any class for next 2 weeks, then also I request all my students to make sure that they keep on learning those two words and keep on making sentences, keep telling that
practicing that in front of mirror. उसको रोकना नहीं है, ठीक है? Because if you keep doing that, after some time you'll realize that no, you don't need a teacher like me. Okay, sir. Yeah. All right. चलिए फिर, take care. Have a nice day. We will connect again next Wednesday. But yeah, with a promise to each other that yes, we'll keep on learning those two words every day. You know? Yeah, sir, sure. All Thank right. you, sir. Thank you so much. And have No. a nice day. Yep. You too. Bye bye.